वेलकम टू इंजीनियरिंग लीडरशिप पाकिस्तान बाय कराची वाला डेवलपर। ये एक पॉडकास्ट सीरीज़ है जो आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली एंड आई विल कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जहाँ पे आई विल बी स्पीकिंग विद डिफरेंट इंजीनियरिंग लीडर्स इन विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, वर्किंग फॉर डिफरेंट स्टार्टअप्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो काम किस तरह करते हैं. There are many topics in the engineering leadership space where we are not very sure about when we're trying to implement them in our own companies. How do you do good performance management or performance reviews? How do you implement a good feedback session in your company? How do you do hiring? Like these are very fundamental questions that sometimes we all struggle with. So my objective with this podcast is to talk with our leaders and better understand on how they go around do these things, what kind of teams they manage, teams they lead, and bring us more insights for all of us so that we can make better decisions and learn from them. And without further ado, let's get into this episode and see what we can learn from the startup we're evaluating today. So, Asabhai, again, thank you for joining us today for this session. I'd like to start off by getting a quick introduction from your side to us, आपका background, and what have you been up to over the last few years. Yeah, so all in all, the it's been like over 15 years, um, and बहुत जल्दी से इतना सारा time गुजर गया. So again, like started off like normal initially. So I joined TPS as a software engineer. That was kind of my first company that I started with, and ended up at right now I'm working at Stellix. So been like in three, five, I think 4 or 5 different companies. Yeah, so if you kind of divide them by services versus products. So yeah, product में ज़्यादा रहा हूँ, TPS, workforce, then I joined Trackit in for a brief period of time, और फिर उसके बाद Airlift join किया, and then still recently joined Stalix. So product based, 10 Plus was the only services based company that I worked in. So um, yeah, that's about it. Very nice. So, Asabhai, from your experience, since you have worked in both product and consultancy, can you share a little bit about if you prefer one of these types yet, or do you think more working in either of them is relatively same for you? Yeah, so I think uh, एक दफा career में you should do a services based stuff at least once, and I recommend के if it is done at the start of your career, that is even better, because kind of के services based में, because at the start of the career you are into more about like the work style and learning things, and technology में थोड़ा सा depth ले लो. um, but as you grow up, so it's very important कि आपको पता हो कि यार how the stuff works at a scale. Monitoring क्या चीज़ होती है, मतलब उसकी स्केल क्या होता है, लाइफ के इश्यूज क्या होते हैं, प्रोडक्शन इश्यूज क्या होते हैं. there are a lot of different things जो कि आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जनरली सर्विसेज बेस्ड में, because the projects are mostly like short lived. So I would recommend like you can do both, and it is based on personal preference. But my reading is that at least you should have experience of like services based company once, but product में आपको जो learning होती है कि scale की, और again आपके अपनी product को आगे लेके जाएंगे, that's like kind of massive. Awesome, awesome, amazing. Asabhai, today I want to focus on your experience in one of the companies you've been working with. So, can you pick up one of the companies that you've worked in and tell us a little bit about its background and what was the company about? Yeah, so I'd like to talk about Airlift because it's kind of the experience that kind of taught me a lot. I unfortunately I couldn't have a long relationship with the company, but I
मैंने जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनके साथ like I worked for quite a few years at another company. So the the best thing about Airlift was whole like as a whole their culture. Um, uh, the kind of ownership I saw there in the engineers was massive. Like I have not seen such kind of ownership and commitment anywhere else. And that comes because the leadership, the kind of values that leadership reward, they actually trickle down. So if the Yeah. leader is transparent with you and they are very open and kind of accommodating, then everyone keeps kind of motivated and inclusive. So yeah, I'll pick Airlift. Yeah. Awesome. Awesome. So let's talk about just to give the context to our viewers. What was the main vision and purpose of Airlift when you joined? So everyone almost like knows the whole story behind Airlift. So it started the transit business, or फिर COVID आ गया, and then they pivoted to quick commerce, and that was kind of it, मतलब it मेरा ख्याल से कोई एक दो तीन दो महीने का वो खाली वो था, like they completely shifted their business. Yes. Yes. Perfect. Amazing. Amazing. So, Iskandar, now I want to again focus on more on the culture and the environment. So, आपने एक बड़ा important part बता दिया, that is you saw a lot of ownership over there. So, if you were to point out any other two or three values from Airlift, and again, I want to focus mostly on the engineering side, but obviously values are company wide. But which values would you pick up? What were the highlights from the values perspective in the company? The another thing that was striking to me was their focus on learning. So उनकी एक वैल्यू थी, be 1% better every day, right? So from ops to business to founders to like engineers, everyone was like kind of following those values. So 1% better का मतलब है हमें हमें like उस्मान गुल भी कहते हैं उनको, उनकी ईमेल आती थी ऑलमोस्ट pretty frequently, जिसमें वो कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ जो ही would read that. इस तरह अहमद भाई जो कि he was kind of co-founder and was heading engineering, वो भी इस तरह कहते थे. एंड देन वी यूज टू हैव वीकली सेशंस विद इन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात हुआ करती थी. सो ये लर्निंग कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट कैरीड ओवर फ्रॉम द इंजीनियर्स जो कि जिन्होंने उसको खड़ा किया था, जो सीनियर इंजीनियर्स थे वहाँ पे. सो दिस वाज अनदर वो स्ट्राइकिंग थिंग जो कि इंजीनियरिंग मैंने देखी कि यार लर्निंग लर्निंग नेवर स्टॉप देयर. फिर ये है कि वहाँ पे एक और बहुत ज़बरदस्ती पर्सनल कनेक्शन था लोगों के बीच में. लाइक दे यूज टू हैव एम्फेसाइज ऑन कि जो मैनेजर्स हैं, इंजीनियरिंग मैनेजर, आई जॉइंड एज इंजीनियरिंग मैनेजर देयर. सो वह ये था कि जो 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 जिस चीज़ से फोकस था वो ये था कि आप वन टू वन कनेक्शन इंजीनियर्स के साथ बढ़ाएं. So we used to have like weekly or bi-weekly kind of one month with the engineers, or even though मतलब regardless of the level कि आप बंदा आपके पास directly आपके अंडर है कि नहीं है, but you could also like schedule one month with anyone in the engineering. So like founder would meet randomly with any engineers to find out if everything is working fine. So मतलब काफी ओपन ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ फ्लैटर काइंड ऑफ मतलब कल्चर था. बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी नहीं थी. Amazing, amazing. Yeah, I think that's usually an advantage, especially when you're much smaller. So, Yeah. Iskandar, you can actually enable things like this within the company from the start. So that's very useful. Amazing. So that's why you mentioned you joined as an engineering manager. So I'm assuming you had a team under you. Can you share a little bit about your team and what was that team doing? So yeah, I joined as an engineering manager, और मेरे साथ जो है वो एक कोई 7 or 8 इंजीनियर्स की टीम थी. विद मोस्टली अच्छी बात ये थी कि दे वर ऑल काइंड ऑफ फुल स्टैक. सो फीचर डेवलपमेंट में काफ़ी आसानी हो जाती थी, बिकॉज व्हेन यू आर फुल स्टैक इंजीनियर यू डोंट वरी अबाउट कि यार फ्रंट एंड और बैक एंड का बैलेंस होना चाहिए. सो and then we used to build kind of internal management system for the company.
सो हम लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट इंटरनल सिस्टम पे काम कर रहे थे। हम लोग इस तरह के डिफरेंट प्राइसिंग की के अंदर कुछ इंटेलिजेंस और डैशबोर्ड्स वगैरह बिल्ड कर रहे थे। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हम लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मतलब एक टिकटिंग सिस्टम था जिसमें कस्टमर्स की राइडर्स की कंप्लेंट्स आती थी। सो हाँ, वो सिस्टम हम लोगों ने एयरलिफ्ट के अंदर ही बिल्ड किया था, और वो इस वजह से क्योंकि इतनी ज़्यादा कस्टमाइज रिक्वायरमेंट थी ऑप्स की जानिब से। सो वो सारा सिस्टम जो है वो इंटरनली बिल्ड हुआ था, उसके थ्रू सारी कंप्लेंट्स वगैरह ट्रैक होती थी। हमारे पास जो है वो मतलब कस्टमर सर्विस एजेंट्स होते थे जो कि वो टिकटिंग सिस्टम को डायरेक्टली देख रहे होते थे और उनको टिकट्स असाइन होते थे। तो इस तरह के बड़े बड़े सिस्टम्स के ऊपर हम लोग जो है वो काम कर रहे होते थे, तो उसकी सपोर्ट, उसकी डेवलपमेंट, इस तरह की सारी चीज़ें थी। Amazing. And if we talk about the stack and how you organize the team around that stack, वो आपने किस तरह सेटअप किया हुआ था उसको? सो स्टैक बैकएंड के ऊपर जो है वो नेस्ट जेएस था, विच वाज काइंड ऑफ फ्रेमवर्क ओवर ऑन टॉप ऑफ नोड जेएस, और फ्रंट एंड एंगुलर था। और मोबाइल के मेरे पास कोई मोबाइल की टीम नहीं थी, बट दूसरी टीम हमारी स्पेशलाइज्ड एक जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस की टीम थी, जिसके अंदर आईओएस और एंड्रॉइड के नेटिव डेवलपमेंट नेटिव इंजीनियर से जो काम करते थे। वी डिडंट वर्क ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म। और या सो अगेन मेरी टीम के अंदर जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी कि वो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विद काइंड ऑफ नो क्यूए वाली अप्रोच। तो हम लोग के पास कोई मैनुअल क्यूए हमने नहीं रखा हुआ था, एंड वी वर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स लाइक फुली ऑटोमेटेड काइंड ऑफ पाइपलाइन एंड ऑल। सो और जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ये थी कि कुछ इंजीनियर्स थे जो कि फ्रंट एंड हैवी थे, बट वो भी बैक एंड पे काम कर सकते थे। कुछ थे जो बैक एंड हैवी थे और वो फ्रंट एंड पे काम कर सकते थे। तो उनको कन्वर्ज कर रहा था मैं कि यार थोड़ा सा जिसका थोड़ा फ्रंट एंड वीक है वो थोड़ा फ्रंट एंड के ऊपर भी डिलीवरी करे, और इस तरह की जो है वो चीज़ें थी। सो या सो इसी वजह से जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था फीचर डेवलपमेंट के लिए कि यार किसको फ्रंट एंड देना है, किसको बैक एंड देना है। कभी कभी ऐसा होता था कि साइजेबल फीचर ऐसे होते थे कि वो एक इंजीनियर ही जो है वो एंड टू एंड पूरा कंप्लीट कर लेता था। Yeah, yeah. That's super amazing. So full stack development team and no QA. That's a very rare combination to find. Yeah. And how big was your team? आपके अंदर कितने developers थे अभी? So they were, I think, 8 or 9 developers, and we were scaling. We hired a few engineers, but of course when it shut down, so we kind of joining it. But again, all in all, it was like 8 or 9 developers. Amazing. And I'm just going to spend a few more minutes here because this is very interesting. Uh, so no QA in there. How did you set yourself up to ensure that you were constantly adding the automated test as well as you were shipping features? So आप लोग ने, what was your strategy around that? Yeah. So to be frank, automation was not the strongest part of the whole unit. और उसका रीज़न ये था कि the pace that we were working on with, उसमें अगेन वो जो सबसे पहली चीज़ सफ़र करती है वो आपके टेस्ट सफ़र करते हैं। सो नेचुरली वो थोड़ा सा इधर भी था मामला, बट उसका उसका जो द काइंड ऑफ द फ्लिप साइड ऑफ दैट इज दैट के क्यूए नहीं था तो डेवलपर्स न्यू के यार दे हैव टू ओन देयर वर्क एंड टू एंड। That's another kind of byproduct of having no QA। वरना होता क्या है, नॉर्मली व्हेन यू हैव QA तो डेवलपर पूरे स्प्रिंट में काम कर रहे होते हैं, आखिर के 2-3 दिन में बेचारे QA को जो है ना पूरी फीचर पकड़ा देते हैं, एंड देन वो फिर वो बेचारा टेस्ट करता है एंड में, और फिर होता है। सो नो क्यूए का एक फायदा ये भी है कि मतलब डेवलपर्स एंड टू एंड जो है ना वो ओन करते थे चीज, बिकॉज अगर if something goes into production and it doesn't work out, so of course developer has to kind of uh, pick that up and fix it up as soon as possible। so ये था। फिर अगेन हम लोगों ने फिर किया था टूवर्ड्स जब थोड़ा और मेच्योरिटी की तरफ जा रहे थे, तो हम लोगों ने ये किया था कि बेसिकली जो इंजीनियरिंग के अंदर एक पूरा एक सेटअप हुआ था वो ये था कि हम लोगों ने जो है वो टेस्ट कवरेज का जो है ना वो एक पाइपलाइन के अंदर वी एडेड अ चेक। तो वो ये करता था कि वो डिफरेंशियल के ऊपर जितना आपने नया कोड लिखा था उसकी कवरेज कैलकुलेट करता था कि उस नए कोड की कवरेज कितनी है, और उसके ऊपर एक थ्रेशोल्ड हमने अप्लाई कर दी थी। सो जो भी नया कोड आ रहा था लेटली, सो वो उसके ऊपर ये था कि एटलीस्ट जो है वो शुड हैव good test coverage. Again, test coverage not the good measure of
kind of determining the effectiveness of your test suite. But ये था कि कुछ starting point था जो हमने डाल दिया था वहाँ पे. Agreed. That's amazing. Awesome. Moving on. So I want to shift the gears a little bit, and I want to now talk a little bit about performance management, because that's one of the places that's very tricky or difficult, especially when it comes to engineering management. Yeah. So what was the philosophy for performance management at Airlift? इट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और इसमें देखें होता ये है कि जो मैंने शुरू में कहा ना कि हमारे जो कल्चर था वो ये था कि 1 मंथ की फ्रीक्वेंसी बहुत थी, राइट. सो वो अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि यार आप जो है ना वो कनेक्ट नहीं करते इंजीनियर्स के साथ डायरेक्टली, एंड देन आप जो है वो कोई अगर बाय बाय ईयर लिए 2 ईयर में 2 दफा वो हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, तो 2 दफा आप मिलेंगे उससे परफॉर्मेंस की वजह से. या अगर वो बहुत ही बुरा करते तो आप मिल लेंगे, बट आप नॉर्मली इतना नहीं फ्रीक्वेंटली में. तो एक तो वो पार्ट था कि हम क्योंकि फ्रीक्वेंटली मिलते थे, तो जो चीज़ होती थी वो देन एंड देयर जो है ना वो मतलब फौरन ही एड्रेस हो जाती थी. या जो ट्रैक था उसका कि उसको कहाँ लेके जाना है बंदे को, इस तरह उसकी करियर प्रोग्रेशन करनी है, उसको हम बड़ी क्लोजली ट्रैक कर सकते थे बिकॉज वी वुड मीट लाइक वीकली और महीने में 2 दफा. सो ये था. एंड देन लेटली हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग OKRs की तरफ शिफ्ट हो गए थे. तो कंपनी लेवल के ऊपर एक मतलब ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स असाइन होते थे, एंड देन उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो टीम लेवल के ऊपर हम लोग जो है वो OKR डिफाइन करते थे, एंड देन वो फिर इवेंचुअली वो इंजीनियर्स के OKRs में कन्वर्ट हो जाते थे. अगेन ये हमने बहुत आखिर में कोई आई थिंक Q2 ऑफ दिस ईयर हम लोगों ने शुरू किया था और फॉर्मलाइज किया था. सो वो भी एक एक तरीका था जिसे वो करते थे. बट ये था कि मेरे मेरे हिसाब से मतलब कोई ना हम बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स के ऊपर नहीं जा रहे होते थे कि यार KPI होनी चाहिए कि कितनी PRs बनाई, कितने जो है ना वो उसने रिव्यूज़ किए, कितने स्टोरी पॉइंट्स कवर किए. इट डजंट मेक मच सेंस बिकॉज स्टोरी पॉइंट ऐसी चीज़ है बहुत बहुत हाई लेवल है. सो उसके ऊपर आप किसी को मेजर नहीं कर सकते. Yes. बट आई थिंक ओवरऑल जो चीज़ पता चल जाती थी, जो चीज़ आपको पता चल जाती है ना वो ये कि बंदे की कमिटमेंट लेवल क्या है. मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यार बंदे ने अगर स्प्रिंट के अंदर पूरी टीम के साथ बैठ के कमिट किया है कि ये चीज़ आई एम गोना डिलीवर, सो उसके ऊपर वो कितना स्टिक कर रहा है, वो अपनी चार चार कमिटमेंट में से कितनी परसेंट जो है ना वो डिलीवर कर रहा है. सो मैं पर्सनली जो है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेके चलता था कि यार उसकी कमिटमेंट लेवल क्या है, जितना वो कमिट कर रहा है उतना वो डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा. बाकी ये था ग्रोथ के लिए जो है हम लोगों ने लेवल वाइज डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाई हुई थी. उसकी टेक्नोलॉजी टेक्निकल स्किल्स हैं, उसकी लीडरशिप स्किल्स हैं, इस तरह की जो है वो 4-5 बड़े एरियाज जो थे वो हमने पूरी उसकी एक मैट्रिक्स बनाया हुआ था, जिसकी बेसिस के ऊपर हम उसको गाइड भी करते थे बंदे को कि यार अगर वो किसी चीज़ के अंदर लैकिंग है, वो खुद भी देख लेते थे इंजीनियर कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या क्या चीज़ों का गैप है. सो उसकी बेसिस पे भी उनको फर्दर गोल्स वगैरह जो है ना वो असाइन कर देते थे. Amazing. So basically what you're talking about is a career ladder जहाँ पे आपने एक matrix में define किया हुआ था कि what each role is and how it progresses over time. Is that correct? Yeah. Ah, perfect. So so one point around engineering performance. So a lot of companies, they like you mentioned, it was a little bit goal oriented or delivery oriented style of measurement, no hard numbers. Magar, when we talk about performance, especially in software engineering, it's such a like a wide field, right? क्योंकि Yeah. इसमें you have to think about collaboration and communication and so many other things as well. तो Yeah. जब उनको हम लोग लेके चलते हैं तो how do you incorporate them in a performance review at any stage? अच्छा. आई थिंक कि देखें अब अगेन द फिलॉसफी बिहाइंड परफॉर्मिंग मेजरमेंट इज दैट यू शुड नॉट, इन माय ओपिनियन, बहुत ज़्यादा यू शुड नॉट लाइक फॉर्मलाइज a lot of stuff going around there, right? So um, the thing that we would do at Airlift was that we would actually measure the परफॉर्मेंस. और जब हम असाइन करते थे या उसको जब काइंड ऑफ रेटिंग असाइन करते थे, सो उसमें एक मेजर पार्ट होता था कि वो वैल्यूज़ जो हमारी हैं एयरलिफ्ट की, जो ओवरऑल 3-4 वैल्यूज़ थी जो कि जिस परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के अंदर जो है वो काउंट करती थी. सो वो
used to kind of rate on that as well कि यार ओवरऑल कंपनी की वैल्यूज को बंदा कितना फुलफिल कर रहा है अपार्ट फ्रॉम द गोल्स जो उसको असाइन हुए हैं. सो सो वो भी एक बड़ा फैक्टर है. बट अगेन ये लाइक दिस इज नॉट अ मशीनरी जिसके साथ आप काम करें, राइट? तो एक मशीन है, उसका आप थ्रूपुट जो है वो इजीली निकाल सकते हैं कि ठीक है यार एक गाड़ी है उसकी एवरेज कितना है, राइट? बट इफ आई टॉक अबाउट इवन रिलेशनशिप्स ना कि यार इफ आई से कि यार ये कितना अच्छा फादर है, राइट? आई कैन नॉट ग्रेड इट, राइट? सो आई थिंक लाइक वाइज ये भी थोड़ा सा जो है ना वो है कि लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व इन दैट. So grading you can do with a certain extent, but a lot of stuff revolves around actually the phenomena, the character, and the behavior that you observe. So उसको उसको वैसे चैलेंजिंग होता है, राइट? यू हाँ, मतलब उसको मेजर करना चैलेंज है. बट आई बिलीव इसको बहुत ज्यादा मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाहिए. All right, makes sense. Makes sense. Amazing. Cool. Moving on, next topic. I want to talk a little bit about hiring, and of course, hiring was probably one of the biggest challenges that you had, probably at Airlift. So I want to focus on specifically when you were hiring. What were the important things that you were looking on in the candidate, and how were you assessing for them? या सो स्टार्ट ऑफ एयरलिफ्ट के अंदर या जिस जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काइंड ऑफ इस वाले हायरार्की में चल रही होती है, उसके अंदर जो है वो जो आपका इंजीनियरिंग मैनेजर है वो पूरा आपका जो है वो हायरिंग मैनेजर भी होता है, राइट? सो हमारे यहाँ हायरिंग मैनेजर की काइंड ऑफ एक सब रोल था इंजीनियरिंग मैनेजर का. सो उसके अंदर जो है वो इवन प्रोफाइल स्कैनिंग करना, उसके बाद उससे मतलब पहला जो स्लॉट होती थी वो एक तो एचआर वुड सेट समथिंग अप विद देम और उसके बीच में कन्वर्सेशन होती थी. बट अगेन जो फर्स्ट एक्चुअल कन्वर्सेशन होती थी वो हायरिंग मैनेजर की होती थी कैंडिडेट के साथ. सो आई पर्सनली अगेन उसमें होता था कि पर्सनली मैं आई वुड लुक फॉर पीपल जिसके साथ आई एक्चुअली इंजॉय कन्वर्सिंग, टेक्निकल कन्वर्जेशन जिसके साथ जो है ना वो बहुत अच्छी हो. तो उसका एक तरीका मैं अक्सर कर लेता था कि मैं छोटे से जो है ना वो कोडिंग टेस्ट होते हैं, बहुत सिंपल से होते थे. बट ये था कि उसको मैं एक लीड कोड के ऊपर इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं उसके ऊपर जो है वो मैं कोड करवा लेता था. तो उसमें मैं कैंडिडेट को पहले बता देता था कि भाई वी आर नॉट हेयर टू काइंड ऑफ आपको तंग नहीं करना, बट ये कि आई वांट टू सी कि अगर मैं आपके साथ पेयर प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ कितना मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ. तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो लाइक वेरी वेरी लाइक काइंड ऑफ बिल्कुल ही काइंड ऑफ जो सोच रहे होते हैं वो उनका पता नहीं चल रहा होता, राइट? सो वो थोड़ा सा मेरे लिए ऑफ फुटिंग हो जाता था. एंड इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस, बट आई लाइक कैंडिडेट जो कि अपने जो है थॉट्स को आराम से शेयर कर सकें, बिकॉज एक टेक्निकल बंदे के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सामने भी एक टेक बंदा बैठा हुआ है, सो उससे किस तरह से जो है वो बात कर सकता है. एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट जब हम थोड़े सीनियर रोल्स के लिए हायरिंग कर देते थे, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अबव. सो जब बंदा बिल्कुल नया है, फ्रेशर है, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो पाता. बट ये था कि ये एक चीज़ थी जिसको मैं देखता था कि ठीक है, और उसके बाद उसकी एक सॉल्यूशन जो वो दे रहा है, इफ़ यू काइंड ऑफ चैलेंज दैट सॉल्यूशन एंड वो आप थोड़ा सा चेंज कर दें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो कितनी जल्दी उसको मैन्यूवर करता है. सो काइंड ऑफ थिंकिंग माइंड. मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर बंदे को नहीं करता था जज, बिकॉज अगर वो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी के अंदर तो मैं पर्सनली नहीं देखता था. दूसरा तक हमारे जो इंटरव्यू का पैटर्न था उसमें जो टेक्नोलॉजी की डेप्थ को लोग देख रहे होते थे वो बाकायदा मतलब एक हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा काम करने वाले इंजीनियर्स होते थे. सो वो उसको मैं उस पर छोड़ देता था. मेरा ये देखने का तरीका होता था कि उससे मुझे कितना उसके साथ एज इन के मज़ा आ रहा है बात करने में, सिंपल कितना आई एम लाइक एम आई हैविंग फन टॉकिंग टू दैट गाय और लाइक आई एम काइंड ऑफ गेटिंग बोर्ड और लाइक क्लूलेस कि यार वो बंदा सोच क्या रहा है, वो कर क्या रहा है. Nice. And that's amazing. Iskandar, Joe, so you talked about doing pair programming. What sort of tasks were you normally giving to them? Were they algorithms from like websites like HackerRank, Code Interview? इस तरह की चीजें थी या was it something slightly different? या इसी तरह की थी. एंड आई वुड चूज लाइक वेरी सिंपल प्रॉब्लम जिसमें बहुत ज़्यादा जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते थे.
तो वो सिंपल से होते थे, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के या लिस्ट के साथ मैनिपुलेशन के, इस तरह के सिंपल से सॉल्यूशंस होते थे, जिसके साथ जो है ना वो करता था। बिकॉज जो जो फोकस मेरा होता था वो ये था कि ये सॉल्यूशंस को किस तरह से सोच रहा है, और दूसरा ये कि वो किस तरह से जो है ना वो उसको मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। सो ये फोकस होता था। ये नहीं होता था कि यार वो कितना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बना सकता है या सॉल्व कर सकता है। तो वो ईजी प्रॉब्लम समझ लें कि अगर मैं हैकर रैंक की बात करूं या कोडिलिटी की बात करूं, तो उसमें से ईजी प्रॉब्लम्स जो है ना वो उस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे। Very nice. Awesome. Um, Moving on, and I want to touch a little bit on engineering productivity. Now, in any company nowadays, where as we want to move faster and faster, we understand we have to think about the tooling, the metrics. I heard a story once. I think it was within Airlift only that the build. I think it was an Android build. Yeah, some build was taking like a minute to do between saves or something, and then they had to get like bigger machines to accommodate for that. So, do you have any interesting stories for any what were your focuses around engineering productivity while you working there? Yeah, so not exactly a story, because like I said कि मेरा बहुत ज़्यादा लंबा टेन्योर नहीं रहा एयरलिफ्ट के अंदर, बट ये ज़रूर था कि अम, जो अच्छी चीज़ ये थी वो था कि अर्ली ऑन जो है हम लोगों ने किसी न किसी फॉर्म में जो है वो पाइपलाइंस बिल्ड करके रखी हुई थी, राइट। सो और हमारी एंड्रॉयड की और आईओएस की टीम जो है ना वो उस मामले में बड़ी सॉलिड हो गई थी कि वो दे वर ब्रिंगिंग इन लॉट्स ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, लॉट्स ऑफ सच स्टफ के यार स्टैंडर्डाइजेशन कोड की और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसमें जो है वो हमारी पाइपलाइन एंड्रॉयड की वो इस तरह की थी कि यू कैन एक्चुअली, और वो गिटहब एक्शन के थ्रू जो है वो उसमें इम्प्लीमेंट की हुई थी। सो हम लोग जो है वो डायरेक्टली जो है वो पब्लिश भी कर सकते थे प्ले स्टोर पे, और फायर स्टोर के लिए हम लोग टेस्टिंग के लिए हमने फायर स्टोर भी पब्लिश कर सकते थे। सो इस तरह की पाइपलाइन जो है ना वो ऑलरेडी बनी हुई थी उसमें। और उसमें ये था कि यू वुड सेलेक्ट कि आपको कौन सी इन्वायरमेंट का जो है वो बिल्ड बनानी है, एंड देन उसके बेसिस पे वो कर देता था। फॉर आईओएस हमारी एक अलग वो आई थिंक मैक मिनी रखी हुई थी, एंड देन वो हमारा जो बिल्ड, मतलब उसके अंदर हमारा एजेंट चल रहा था बिल्ड एजेंट, वहाँ से वो बिल्ड बनती थी। बट उसके अराउंड में कोई स्टोरी आई आई कैन नॉट रिकॉल अभी कि वो उसमें कुछ हुआ हो। बट या हाँ, ये था कि हम लोगों का ए डब्ल्यू एस के ऊपर काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशन जो हमने लेटली करनी शुरू कर दी थी, बिकॉज वो जिस तरह से पेस के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप जो है ना वो, एंड देन व्हेन यू हैव काइंड ऑफ वो आपको डिलीवर करना होता है चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। सो उसके ऊपर हम ये था कि बहुत सारी चीज़ें हमने कर दी थी एडब्ल्यूएस के ऊपर, देन वी वर ऑप्टिमाइजिंग एज वेल कि यार थोड़ा सा चीज़ें हमने बहुत जेनरसली वहाँ पे यूज़ की हुई हैं। EC2 इंस्टेंसेस का साइज़ हो गया, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। सो वो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे थे कि इसको किस तरह से जो है ब्रिंग डाउन किया जाए, किस तरह से वहाँ पे किया जाए। तो वी वर ऑल्सो काइंड ऑफ डूइंग दैट स्टेप एज वेल। Awesome. And just out of curiosity, so you had a full stack team. Was the team also responsible for deploying to the cloud and manage it, or was there a separate DevOps team for this? देयर वाज सेपरेट डेवऑप्स टीम फॉर दैट। और हमारे यहाँ जो है था प्रोडक्शन का एक अप्रूवल पूरा प्रोसेस होता था, जो जो कि एक्चुअल में जो है ना इसमें डेवऑप्स के लोग ही होते थे डेजिग्नेटेड, जो कि वहाँ से एक्चुअल अप्रूव होते थे, या आपके ईएम ने अगर अप्रूव कर दिया तो वो होता था। बट इंजीनियर्स वर नॉट अलाउड टू एक्चुअली पुश अ बटन एंड डिप्लॉय टू प्रोडक्शन डायरेक्टली। सो वो इधर डेवऑप्स के लोग होते थे और वो होते थे, उसको भी हम थोड़ा सा और स्ट्रेंथन भी कर रहे थे। बट ये था कि जो हमारी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट थी, वो हर टीम की अलग अलग जो है वो एक इन्वायरमेंट बनी होती थी, वहाँ पे वो डिप्लॉय होता था। वहाँ पे जो है ना वो आप जैसे कोड पुश करते थे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे डिप्लॉय हो जाता था। ब्रांच वाइज हम लोगों ने किया हुआ था। Amazing. And any particular reason for not allowing engineers to deploy to production at this stage? आई वुड से कि मतलब नॉर्मली जो इंजीनियर जिस 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 तरह से या जिस प्रेशर के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वो उसके अंदर जो है ना वो काइंड ऑफ देयर हैज टू बी अनदर आई। और दूसरी इसमें बड़ा फैक्टर ये था कि वो जैसे मैंने बताया कि हमारा टेस्ट सूट जो है वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था कि वो एंड टू एंड पूरी चीज़ें जो है वो टेस्ट कर ले।
सो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना डिलीवरी के ऊपर डायरेक्टली वो वाली चीज़ नहीं थी। तो वंस इंजीनियरिंग मैनेजर कहता था कि ठीक है इट्स काइंड ऑफ गो अहेड फ्रॉम माय साइड, देन वो फिर जो है ना वो डिप्लॉय होता था। सो अगेन ये सब चीज़ें हम सॉल्व हो जाती वंस वी हैव बिल्ट दैट काइंड ऑफ गुड सॉलिड टेस्ट सुइट, जिसके अंदर जो है वो आप सारी चीज़ें कवर करते थे, फिर आपकी सी आई सी डी और ज़्यादा जो है पॉलिश हो जाती है। बट जब तक वो नहीं था उस वक्त है कि ह्यूमन आई कोड रिव्यूज़ के ऊपर भी हम लोगों ने वो लगाए होते थे कि भाई कोड ओनर्स हमारे होते थे रिपोजिटरीज के ऊपर के वो जब तक रिव्यू नहीं करेंगे तो मास्टर में मर्ज नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें। इस तरह ई एम का रिव्यू नहीं आएगा तो मास्टर में मर्ज नहीं होगी। तो इस तरह के हम लोगों ने जो है चेक्स ऑलरेडी लगाए हुए थे, इसी वजह से क्योंकि कि आप उसके ऊपर फाइनल एक अथॉरिटेटिव जो है वो एक स्टैंप लग जाएगा यार ठीक है अब ये इट्स गुड टू बी रिलीज और टू बी मर्ज द मास्टर। Yeah, makes sense. Makes sense. Cool. Awesome. I think Asabhai, that does wrap up our session for today. So thank you again for your time and sharing all of these very interesting things. Yeah, sure, definitely. Thanks, Mashood, for this.